जो जिनका जो भी स्ट्रीम होगा आपको तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड करंट नोट्स को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अब ये तो लाइक ऐसा कोई फिक्स एंड रिजिड टाइम शेड्यूल हो नहीं सकता क्योंकि सब पर्सन्स का लाइफस्टाइल अलग होता है। गेट CSC 22 with an all India rank of 213. Over to you. ओके संदीप, आप क्या बता सकते हो, आपने काफ़ी अच्छा रैंक लाया गेट में, तो आप अपना टाइम टेबल शेयर करो। आप कब से स्टडी स्टार्ट किए थे, डेली पढ़ते थे और कितना दिन में टाइम देते थे? Okay, so like I started thinking about GATE from my third year only. So I just started preparing from what to say like November of 2020. So and I gave GATE 2021 also, though my rank was not that much good. So I had an idea about what the subjects are and what it contained, though I didn't have that in-depth knowledge. So that I gathered this for this time's attempt, and I got my syllabus covered around say June. Then I had to take a break of 1.5 of around 2 months for my placement preps and all. And after that got over, I again resumed my preparation from October. And but that time I mostly focused on giving mock tests, practice questions, and previous year's questions. So starting with so speak of the timetable, as you can say, I used to get up around 6:30 to 7, do some basic workout, and then come to study. I used to study for 2 hours, like when I used to revise my old subjects, and along with that practice their PYQs given in the subject notes only. Then I used to like take some rest, and then again the second session of my timetable starts. That time, like from around 11 to 2 was mainly allocated for my giving mock tests and all, and mock test and analysis. After that, I used to have my lunch, take a bit of rest, and again and in the afternoon session also that's same, some notes revision and some PYQs. And in the evening session, I again used to go for some mocks, and that's how I call it a day by around 12 a.m. you can say. And in the middle, sometimes there are a few entertainment breaks also, like for like refreshing my mind. ओके संदीप, मैं बात करूं, अभी 12th के भी बोर्ड के एग्जाम आने वाले, और भी काफ़ी एग्जाम्स होने वाले, इंजीनियरिंग में भी एग्जाम्स होने वाले, फाइनल सेम के एग्जाम होने वाले। तो आप क्या टिप्स दोगे जिनके अभी एग्जाम आ रहे हो, वो किस तरह से अपना टाइम टेबल को मेंटेन करें? ओके, लाइक टाइम टेबल एज आज आप जैसे बोले कि लाइक 12th के एग्जाम के लिए तो टाइम टेबल थोड़ा सा अलग होगा, और लाइक कॉलेज के लिए थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि कॉलेज में हम लाइक कुछ दिन पहले ही पढ़ते हैं, हम इंजीनियर लोग। तो लाइक कॉलेज के लिए तो ऐसा कोई टाइम टेबल हमने कभी नहीं बनाया नहीं था, क्योंकि लाइक लास्ट 2-3 दिन पहले ही सब नोट्स आते थे, वही लाइक हम रिवाइज करके जाते थे और लाइक एग्जाम में वही लिख देते थे। तो ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं था। और 12th के लिए तो लाइक ऐसा ही, जो जिनका जो भी स्ट्रीम होगा आपको तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड करंट नोट्स को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अब ये तो लाइक ऐसा कोई फिक्स एंड रिजिड टाइम शेड्यूल हो नहीं सकता क्योंकि सब पर्सन का लाइफस्टाइल अलग होता है। तो वैसे तो उनको थोड़ा सा लाइक एकोमोडेट करना पड़ेगा, बट व्हाट वी मस्ट से लाइक वी शुड नॉट लाइक कीप लर्निंग न्यू स्टफ्स विदाउट रिवाइजिंग, बिकॉज उससे कोई फायदा नहीं होगा हमारा। लाइक हमको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, उसके साथ न्यू चीज़ें सीखना पड़ेगा, फिर होगा अच्छा।